अब हम बात करेंगे एक बायोकेमिकल एसे के हवाले से विच इज़ नेम्ड एज ELISA। ELISA और एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, ये एक ऐसा टेस्ट है जिससे हम एंटीबॉडीज़ को डिटरमिन करते हैं, एंटीबॉडीज़ को यूज़ करते हुए एंटीजन्स को डिटरमिन करते हैं, और ये डिटर्मिनेशन जो है ये कलर चेंज की बेसिस पे डिटरमिन किया जाता है, दैट हाउ मच कलर इज चेंज्ड इन द सैंपल दैट रिफ्लेक्ट्स द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर एंटीजन। इस मेथड की अगर एप्लीकेशन देखी जाए, दिस इज़ क्वाइट कॉमन मेथड विच इज़ यूज्ड इन वेट लैब्स जिसमें हम रिएजेंट्स यूज़ करते हैं, जिसमें हम सैंपल यूज़ करते हैं, एज़ कम्पेयर टू ड्राई लैब जिसमें कंप्यूटर या कंप्यूटर एप्लीकेशंस यूज़ की जाती हैं। इस मेथड ELISA में जब हम सॉलिड फेज के हवाले से बात करते हैं, बेसिकली कॉन्सेप्ट इसमें ये आता है दैट वी हैव एन एंटीजन, an antibody binds to it, and through this solid phase study we are able to do an enzyme immunoassay. Enzyme will be involved in it, an antibody will be involved in it, therefore we named this method as enzyme immunoassay to detect the presence of any substance, most specifically an antigen in any liquid sample or in any wet sample. जब टिश्यूज़ के हवाले से बात की जाती है, ऑर्गन टिश्यूज़ के हवाले से या फिर प्रोटीन एक्सट्रैक्ट के हवाले से बात की जाती है, उस प्रोटीन एक्सट्रैक्ट में अगर किसी पर्टिकुलर प्रोटीन को हमने स्टडी करना है, देन वी कैन यूज़ दिस मेथड। बिफोर द invent of this method, the possible ways to study the presence or absence of protein in any given sample was use of radioactive substances, that radioactively labeled antigens or antibodies. That radioactively labeled antigens were used for this purpose, which were harmful for the researcher because of continuous emission of the radiations. After the discovery and establishment of this method, researchers are now safe to work with the antigens to find out the antigens in any given sample, because now instead of using the radiolabeled method, they are using antibodies to determine the presence of any particular antigen. Typically, this method is performed in a 96 well plate, which is made up of polystyrene plates. However, now there are some robotic machines are available for which we can use larger plates having 384 wells, which can analyze large number of samples at any given time. अगर इस पिक्चर को गौर से देखें, हमारे पास जो ऊपर वाली पिक्चर है, let me highlight it. This particular picture, this is the picture of 96 well plate, जिसको हम यूज़ करते हुए ELISA टेस्ट परफॉर्म करते हैं। सेम प्लेट को यूज़ करते हुए एक टेस्ट परफॉर्म किया गया है, विच इज़ शोन हियर, एंड यू कैन सी दैट द कलर डिफरेंसेस इन डिफरेंट सैंपल्स. दिस change in color or difference in color is basically the theme of this test. When we talk about principle of ELISA, this is basically binding and immobilization of reagents, which makes it possible to determine any particular antigen. All the reactants are immobilized in that given well, and washing step is going to remove any unbound or any immobilized material from that particular well, and at the end whatever the results come, they basically reflect the presence or absence of the antigen, and this is possible with the help of some detection enzymes. These detection enzymes, they act on a substrate to develop the color, and that intensity of color is basically going to give us any indication of presence or absence of any antigen or antibody. Most commonly used detection enzyme is horseradish peroxidase or alkaline phosphatase. Both of these enzymes are the commercially available kits. They are used for performing this method, or in the laboratory we can make the ELISA setups by ourselves.